welcome to Business Now, where we track all the top stories at this hour in the Mumbai News Centre. I'm Aisha Faridi. Business Now. A 17-year-old girl is allegedly raped by a cop and acid is thrown on some other young girls. Clearly, violence against women is a huge issue. South Asia World's Alistair D'Souza reports on the help at hand. All the world's a stage, even the slum in Mumbai. The actors are social workers, sending a message on how Indian men can be masculine and yet sensitive. The way the boys and girls are brought up, we tell boys that they should be violent, they should be aggressive, and they should be dominating and fighting and adventurous all the while. While with girls, we always say they should be submissive and they should surrender. Before scripting the street plays, the group spent months interviewing men from the slums, questioning them about eve-teasing and also abusing women. आमतौर पे हर आदमी को लगता है कि जब भी औरत ना बोलती है तो समझ लेना हाँ। अगर वो खुद होके बोलेगी तो उसको बच्चलन बोलेंगे, अरे ये तो हाँ बोल रही है, इसका मतलब ये चालू है या बच्चला नहीं, ये भी है। अगर वो नहीं बोलती है तो मतलब समझ जाना चाहिए कि वो उसकी हाँ है। Besides using drama, the social workers hope discussion groups like these also help. They want men to know that showing their caring nature doesn't make them any less of a man. It was felt, it was realized that involvement of men is very much essential while dealing with this issue, because we just talk of gender, we talk of reducing violence against women, but constantly work only with women. So it was necessary that we work with men as partners, not as hindrance. With street plays or workshops, the true test of the lessons learned are when the men return home to their wives and daughters. That, of course, is a battle that could take years, if not generations, to win. Alistair D'Souza in Mumbai, South Asia World. Big weekend. Good morning and welcome to Power Breakfast. It's Monday, the 25th of April, and I'm Karma Paljar in the Delhi studio. Good morning in the Mumbai News Centre. I'm Aisha Faridi, and let's start. 10-year-old girl is recovering in Mumbai after being allegedly raped by a cop. Over the last few weeks, there were acid attacks on some other young girls as well. From eve-teasing to sinister attacks, violence against women is a huge issue. Here's a report from our affiliate channel, South Asia World. All the world's a stage, even the slum in Mumbai. The actors are social workers, sending a message on how Indian men can be masculine and yet sensitive. The way the boys and girls are brought up, we tell boys that they should be violent, they should be aggressive, and they should be dominating and fighting and adventurous all the while. While with girls, we always say they should be submissive and they should surrender. Before scripting the street plays, the group spent months interviewing men from the slums, questioning them about eve-teasing and also abusing women. आमतौर पे हर आदमी को लगता है कि जब भी औरत ना बोलती है तो समझ लेना हाँ है। अगर वो खुद होके बोलेगी तो उसको बच्चलन बोलेंगे, अरे ये तो हाँ बोल रही है, इसका मतलब ये चालू है या बच्चला नहीं, ये भी है। अगर वो नहीं बोलती है तो मतलब समझ जाना चाहिए कि वो उसकी हाँ है। Besides using drama, the social workers hope discussion groups like these also help. They want men to know that showing their caring nature doesn't make them any less of a man. It was felt, it was realized that involvement of men is very much essential while dealing with this issue, because we just talk of gender, we talk of reducing violence against women, but constantly work only with women. So it was necessary that we work with men as partners, not as hindrance. With street plays or workshops, the true test of the lessons learned are when the men return home to their wives and daughters. That, of course, is a battle that could take years, if not generations, to win. Alistair D'Souza in Mumbai, South Asia World.
Aisha Faridi signing out of the Mumbai News Centre. And I'm Karan Falju in Delhi, but do stay tuned to CNBC TV 18 as we bring you more political and business news throughout the day. Power breakfast. नमस्कार, दोपहर का कारोबार में हम हाजिर हैं बाजार, कारोबार और देश दुनिया की खबरों के साथ। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। किसी लड़की के साथ बलात्कार तो किसी के चेहरे पर तेजाब फेंक देना, ऐसी तमाम घटनाएं समाज में महिलाओं के साथ बढ़ रही हिंसा को दर्शाती। इसे रोकने के लिए सरकारी कड़ाई के साथ ही सोच में बदलाव जरूरी है। इसी बदलाव की कोशिशों को बयां करती है एक रिपोर्ट। क्या होती है मर्दानगी? घर की औरतों के साथ मारपीट करना तो हरगिज नहीं। मुंबई की इस झोपड़पट्टी में ये सामाजिक कार्यकर्ता यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। The way the boys and girls are brought up, we tell boys that they should be violent, they should be aggressive. इन लोगों को ऐसे ही पाला गया है। लड़कों को तेज तर्रार रहने को कहा जाता है, जबकि लड़कियों को चुपचाप सब सहन करने के लिए समझाया जाता है। Submissive and they should surrender. लेकिन इस ग्रुप ने ये नुक्कड़ नाटक तैयार करने से पहले खासी मशक्कत की है। उसने झोपड़पट्टियों में रहने वाले 2000 से ज्यादा मर्दों से छेड़खानी और महिलाओं के साथ बदसलूकी जैसे सवाल जवाब किए और तब जाकर नाटक की स्क्रिप्ट तैयार हुई। आमतौर पे हर आदमी को लगता है कि जब भी औरत ना बोलती है तो समझ लेना हाँ है। अगर वो खुद होके बोलेगी तो उसको बच्चलन बोलेंगे, यार ये तो हाँ बोल रही है, इसका मतलब ये चालू है या बच्चलन है, ये भी है। अगर वो नहीं बोलती है तो मतलब समझ जाना चाहिए कि वो उसकी हाँ है। इन नुक्कड़ नाटकों के साथ ही इस तरह के ग्रुप में चर्चा भी कराई जा रही है ताकि पुरुषों के रवैये में बदलाव आए। It was felt, it was realized that involvement of men. हमें ये लगा कि इस मामले में पुरुषों को भी शामिल करना चाहिए। अक्सर होता यह है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की पड़ताल करते वक्त पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए इस बार हमने ऐसा किया। It was necessary that we work with men as partners, not as hindrance. महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए रातों रात कोई फॉर्मूला नहीं मिल सकता, लेकिन इस तरह के नुक्कड़ नाटकों के जरिए मर्दों को महिलाओं के अधिकारों के लिए राजी करना ज्यादा आसान हो सकता है। एलिस्टर डिसूजा, आवाज, मुंबई। नमस्कार।